Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, Nazareen or Samin. You are watching program Roshani on Hidayat TV. As you are aware that the aim of the program is to promote positive image of people with disability, raise awareness about the services, discuss positive health messages, and sometimes discuss community issues. Today, I do apologize that due to the technical reasons, we were not able to join at 1 o'clock. I hope that you will be able to watch our program. It is being you can watch the program on Hidayat TV YouTube, Hidayat TV Box, and Hidayat TV Facebook, my Facebook, Imtiaz Naqvi Facebook, and Instagram, and some other forum. So because we have we've wasted so much time due to technical reasons, so I will go directly to my guest. I'm really pleased to have two guests. I'm really grateful to both of them that they have agreed to join me to discuss a very important issue about Alzheimer dementia that is known as dementia in our community. But I will ask the guest that what is the difference between Alzheimer and dementia. Well, thank you very much, Ben, for joining me, and thank you very much, Shagufta, for joining me today. Thank you for having me. Thank you. So viewers, I have Ben Johnson. He is local services manager for West Yorkshire for Alzheimer. Is it Alzheimer Society? Is that correct, Ben? It's Alzheimer Society, yes. Right, and we're a national charity. And then I have excuse me, my throat is dry after drink. Excuse me. I have Shagufta Majid. She is dementia advisor for South Asians community. Okay, so because I am, although I'm using Braille machine, but I'm not very good at reading with my fingertips, so I'm listening to the questions. So therefore, please excuse me. The first question I would like to ask Ben, can you please explain what is the difference between Alzheimer and dementia? And then once you've answered this question in details, and then I have another question, then I will ask Shagufta, and then I'll go back to you. And then again, I'll go to Shagufta and go back to Ben. So is that okay? That's lovely. So can you answer, Ben, can you answer the first question? So the difference between Alzheimer's and dementia, I'll explain to you. So the first thing we need to understand is dementia is the name for a group of symptoms. And these symptoms occur when parts of a person's brain is damaged. And there's many forms of dementia. And Alzheimer's disease is just one of those forms of disease. So Alzheimer's disease is one form of dementia. And each form of dementia, there's over 100 different forms of dementia. Some of them have similarities in the symptoms, and some are quite different. And it depends on where the damage in the brain happens as to what the symptoms of the dementia are. So dementia is a disease of the brain, and no two cases of dementia are ever the same. I've worked with lots and lots of people, probably hundreds of people, and they've never experienced dementia in the same way. So Alzheimer's disease is one type of dementia. There's lots of different types of dementia, and dementia is a sort of umbrella term of the symptoms of what people might experience. I'll talk more to you, I think, later about what the symptoms of dementia is. All right. Well, yeah, I think you've explained very well that the Alzheimer is umbrella to a group of dementia symptoms.
So I was not aware of that. I only knew about dementia. I heard about Alzheimer, but I think similarly other people may have similar views regarding dementia, because we have only heard about dementia and heard about Alzheimer, but I didn't know about the differences between the Alzheimer and dementia. So the question one is, so I go to question one. Okay, what are the symptoms of dementia? Let me listen to it. Is that one of my questions? What are the dementia symptoms? Yeah. So the symptoms, the first symptom that most people see with most types of different dementia are the effects on the short-term memory. So that's what's happened recently. So why have I come into this room? What did I come for? What have I just been doing? What did I eat for breakfast this morning? What did somebody say to me in a recent conversation? And those short-term memory things, in most dementias, they are the first sort of things that often affect a person. But there are other symptoms as well. So symptoms like becoming a little bit more disorganized because somebody finds it difficult to concentrate. Somebody might have difficulty following a routine that they normally do, or doing a sequencing activity. So when I say sequencing activity, I mean something like making a cup of tea, something like getting dressed, those things where you need to do things in a set order. If somebody can't do the reasoning anymore, those things become more difficult. Some people have perception difficulties, with sight difficulties, so going down steps becomes difficult. Parking a car can become difficult. Even getting confused between what a bus card is and maybe a payment card. They might get on a bus and try and use the credit card to get on the bus because they're seeing a small rectangular card, but they've just confused it slightly. They've confused what the use is. There's lots of other symptoms as well, which I can talk about later, but there's some of the common symptoms. And those symptoms of confusion and planning, short-term memory, those things all make life more difficult for people, so that eventually people will need help with daily tasks. Some people have difficulties with language. They can't quite get the words out of their lips. They know what they want to say, but they can't really get them out. Sometimes nouns, that's our naming words, get muddled up. Sometimes names of people get lost. And sometimes we see changes in behaviour as well. So that can be difficult for people around people when behaviour starts changing. So what should people do in the first instance when they have the symptoms that you have described? Shall I do this one, Shagufta? Yeah. Yes, Yeah, please. that's Yes, fine. yes, So please. when somebody's a loved one is starting to develop dementia, I think some of the things is to remember that they're the same person. They're the same person. They've still got all the history of their life, and the relationship might change as we go forward. But it's really to try and remember to speak a little bit more slowly, so they've got time to process what you're saying. Remember that your body language is really important. Somebody will pick up if you're looking angry, but trying to sound like you're not angry. The person might pick up that you are looking angry, and might be lose their confidence really. You could do things together, support a person to continue doing the things that they love doing and like doing, and support them and involve them as much as possible in everyday tasks. So if a person used to enjoy
sewing, for example, maybe helping them to thread the needle and to set them off on the activity so that they can then do something which is quite the pattern after that, and they might keep going. If they enjoyed gardening, let them still do the gardening, but you might be outside with them and might say, well, I'll fetch the watering can. Shall we do these flowers first, or shall we do these flowers first? So try and involve them as much as possible, but also get support for yourself. And Shagufta's going to be telling you about her local services. I'll tell you about our national services later on. And by getting the support for yourself, you will learn strategies so that you can support a person to live as well as possible. I come to you later with the question about the support. How can people get the support? But I'll switch to Urdu now with Shagufta. Shagufta, आप ये बताइए कि हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है इसमें कौन सी जो मोस्ट कॉमन डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं, इस पर आप तफसील के साथ रोशनी डालें प्लीज. Shagufta, can you hear me? Shagufta, can you hear me? Ben, can you see Shagufta? Yeah, I can see you. I can hear you. Sorry, I can hear you. Just another technical difficulty again. जी मैंने क्वेश्चन जो किया था आपने शायद पता नहीं आप सुन रही थी. मुझे सुन लिया. हाँ जी मैंने सुन लिया. जी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए जो सिम्टम्स हैं वो मोस्ट कॉमन, उसके ऊपर तफसील के साथ बताइए कि हमने टाइम को कवर भी करना है. अच्छा, so the most common types of dementia जो हमारी कम्युनिटी विच है, मतलब ये सिर्फ अपनी मेरी हमारी कम्युनिटी में नहीं, हर कम्युनिटी में जो कॉमन डिमेंशिया है वो अल्जाइमर्स है या वास्कुलर डिमेंशिया. जो अल्जाइमर्स है वो इसलिए कॉमन डिमेंशिया है इस बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड कॉमन है. ये डिमेंशिया अल्जाइमर्स ये एनीवन को हो सकता है. It's not कि सिर्फ साउथ एशियंस को ये होता है, ये साउथ एशियंस में कॉमन है. It's the most common dementia overall in the world, in the whole world. तो इसकी जो रिस्क फैक्टर्स है, इसकी जो हाई ब्लड प्रेशर है, जिनके पास lack of physical activity, जिंदा हमारे लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, मतलब स्पेशली जब वो सियाने हो जाते वो सोचते बस हमने घर में बैठना. लेकिन ये सही बात नहीं है कि हमने कोशिश करना था कि इवन इन आवर 40s 50s के हम अपने आप को एक्टिव रखें. ये जो मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स. डिफरेंट टाइप्स की डिमेंशिया के ये मेन रिस्क फैक्टर्स आते हैं. ये जो है हेल्थ की जो इश्यूज है ये हमारी कंट्रोल में है. हमारा हाई ब्लड प्रेशर है तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल है, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम अपनी सेहत की लुक आफ्टर करें, हम आप रेगुलर एक्सरसाइज करें. नहीं बाहर जा सकते तो घर में आप थोड़ा सा अपने गार्डन में या अपने घर में जस्ट वॉक अप एंड डाउन की ट्राई करें कि 5 to 10,000 स्टेप्स दिन में कर ले. किस तरह पूरे दिन यू हैव 12 आवर्स इन द डे जो आपके पास टाइम है कि थोड़ी बहुत कुछ आप कोशिश करें एक्सरसाइज करने के लिए. So these are very important. जो मेन जो डिमेंशिया हमारी कम्युनिटी में जो कॉमन है इस वास्कुलर डिमेंशिया. तो जो वास्कुलर डिमेंशिया is high because it's to do with your cardiovascular disease, हार्ट की जो इश्यूज है. तो हमारी कम्युनिटी में ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, अगेन हाई ब्लड प्रेशर, हर पर्सन को आप पूछे तो डायबिटीज है. ये जो चीजें हैं ये सब ना अपने हाई रिस्क में डाल देते टू गेट वास्कुलर डिमेंशिया. तो इसलिए हम ये इन्फोर्स करते कि बहुत जरूरी कि आप अपनी सेहत की लुक आफ्टर करें. आप अपनी बॉडी की लुक आफ्टर करेंगे तो आप अपना रिस्क लो कर सकते कि आपको ये डिमेंशिया ना हो जाए. जो वास्कुलर डिमेंशिया, मेरे डैडी को भी वास्कुलर डिमेंशिया था, तो उसकी जो सिम्टम्स थे ये जो बेन ने बताए इज वेरी सिमिलर. लेकिन जो मेरे डैड के सिम्टम्स थे वो थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो जाता था. वो उसकी सिम्टम्स ये भी था कि वो कभी कभी
ये भी कहता था किसी ने मेरे पैसे चोरी कर लिया, एक्यूजेशंस, फॉल्स एक्यूजेशंस करते थे, कभी-कभी उनको चीजें भी नजर आती थी। तो हमारी जो कम्युनिटी में है ये काफी स्टिग्मा है टू डू विद डिमेंशिया। हमारे जो लोग हैं वो कभी-कभी ये सोचते हैं कि इसको किसी ने जादू कर लिया या इसके अंदर जिन चल गई, क्योंकि जो बिहेवियर होता है उनका है ना, ये थोड़ी जी ऐसी सिमिलरिटी शो करते हैं। मेरा डैडी का गुस्सा एक मिनट ठीक ठाक बैठे थे, दूसरे मिनट एकदम उसको गुस्सा आ जाता था। लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं डिमेंशिया के बारे में पता था, लेकिन हम लोग इधर के बॉर्न और ब्रेड है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोई हमें एजुकेशन नहीं थी डिमेंशिया के बारे में। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो कम्युनिटीज है कि दे एजुकेट देमसेल्फ अबाउट डिमेंशिया। ये एक इलनेस है, ये ब्रेन की डिजीज है, ये नहीं कि ये सयाना हो रहा, इसकी एज ज्यादा हो रही इसलिए इनको बोलना शुरू हो गया। बोलना तो फर्स्ट साइंस है। ये जब डिमेंशिया डायग्नोसिस होता है, जिस तरह बेन बता रही थी कि प्रिवेंशन, लेकिन आपको शक लग रहा कि हमारी फैमिली मेंबर को इस तरह हो रहा है, सिम्टम्स शो कर रहा कि ज्यादा बोलना शुरू हो रहा है, रिपीट क्वेश्चंस कर रहे, चाय बनाने जा रहे तो भूल जाते कि मैंने कैसे चाय बनाना। देन फर्स्ट थिंग इज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अपने जीपी के पास जाएं। आप जीपी के पास जाएंगे तो वहां उधर वो एक थोड़ा छोटा सा मेमोरी टेस्ट कर सकते सर्जरी में। जब उनको महसूस होएगा कि इनको लग रहा क्या है ना, तो फिर वो आपको मेमोरी क्लिनिक भेज देंगे। वहां वो काफी इंटेंस मेमोरी टेस्ट करेंगे, ऑल्सो फिर ब्रेन स्कैन भी करेंगे, तो बताएंगे आपको कि किस टाइप का डिमेंशिया आपको है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ आपके अर्ली स्टेजेस है, स्पेशली अल्जाइमर्स है, अर्ली स्टेजेस है, तो उनके लिए एक मेडिसिन वो दे सकते आपके लिए। ये नहीं कि वो अल्जाइमर्स को क्योर कर देगा, लेकिन ये है कि उसको स्लो डाउन कर सकता है। लेकिन इफ यू डोंट गो फॉर द डायग्नोसिस, इसका ये मतलब होएगा you will not be able to get that medication if it's Alzheimer's you diagnosed with. ठीक है? और भी डिमेंशिया है, लेकिन वो काफी रेयर है। एक तो लुई बॉडीज है, वो जो लुई बॉडीज है वो लेस कॉमन है, लेकिन इट डज अफेक्ट द साउथ एशियन कम्युनिटी। उसकी पर्सनालिटी, लैंग्वेज, मेमोरी, ये चीजें पहले आपको नजर आएगी, स्पेशली उसका बिहेवियर चेंज होगा। जो मेमोरी उसकी होगी वो थोड़ी सी बाद में आएगी। एक और भी है फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया, वो जो आगे ब्रेन और साइड की जो है ना उसको इफेक्ट कर रहा है। अगेन पर्सनालिटी, बिहेवियर, लैंग्वेज। तो हमारे सर्विस में एक सर्विस यूजर आया था, वो बांग्लादेशी बैकग्राउंड था उसकी। उसको पता कैसे हुआ डायग्नोज, वो बांग्लादेश में गया था, वहां उसको किडनैप किसी ने कर लिया। तो उन्होंने उसके जो सिर में काफी ज्यादा चोटें लगी। जब वो वापस आए तो उसकी जो जबान थी वो कम होगी, तो उसकी जो मेमोरी थी वो भी कम होगी, क्योंकि चोट के साथ कोई सीवियर चोट, ट्रॉमा हो गया अपनी ब्रेन के ऊपर ना, that can put you in the risk of getting dementia as well. तो उसकी जबान बिल्कुल चलेगी। अभी उसकी एज 46 है, तो उसकी जबान बिल्कुल फिनिश होगी। तो वो जो आईपैड है ना, उसके साथ अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिमेंशिया आप इसको सीरियस लें, तो आप इसका इलाज करवाएं। अच्छा, ये आपने जो बताया कि एक्सीडेंट के साथ भी डिमेंशिया किसी को हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके और डिफरेंट कोई हेल्थ रीजंस हों, एक्सीडेंट के साथ भी डिमेंशिया हो सकता है। तो ये बताइए कि ब्रेन ट्रॉमा, एनी काइंड ऑफ ब्रेन ट्रॉमा, जो चोट भी लग सकती, कोई स्ट्रोक के साथ भी हो सकता है, अपने हाई रिस्क में हो जाता क्योंकि ब्रेन को मतलब ट्रॉमा होती है। इस टाइप का भी आपको हाई रिस्क में, मैं अपने डैडी का भी बता, मेरा डैडी के साथ भी ऐसा हुआ था। वो ग्लासगो में पेट्रोल स्टेशन में काम करता था, कोई चोर आ गए थे, उन्होंने आयरन बांध के उसके सिर के ऊपर चोट लगाई थी, काफी सीवियर। आई डोंट नो, मे बी वो जो चोट थी वो ब्रेन में थी, तो लेटर ऑन उसकी लाइफ में उनको इफेक्ट हो सकता था। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुसी अपना ध्यान रखें। आपका कोई भी शक हैगा, कोई भी आइडिया है कि ये लग रहा है, क्योंकि फैमिली मेंबर जो है ना, उनको पहले नोटिस होता है कि इनके साथ कोई ये एक्टिंग और इसका बिहेवियर जो डिफरेंट है, फैमिली मेंबर पहले नोटिस करते हैं। सो इसलिए इस जस्ट कीप एन आई ऑन, बी विजिलेंट के, यू नो, स्पेशली ओवर 65 70 तक के
just notice कि behavior change हो रहा है या कोई repeated बातें कर रहे हैं कि maybe there's something going on there. ठीक है, हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे फैमिली सपोर्ट और बाकी जो सपोर्ट अवेलेबल है वो उसके ऊपर बात करेंगे. हम go back to Ben again for another question, please. Can you explain, Ben, regarding the if someone has these symptoms, they as Shugufta mentioned that they need to go to their GPs. Once they're diagnosed, what are the services or support available for these patients, and how family can support a patient with dementia? Okay, so services available for people with dementia in the UK are good if people know how to access them. This is the problem. So people go to the GP, then they go to a memory clinic, and that's where they do some simple diagnostic tests, usually using pen and paper and answering questions. And they'll talk to a consultant about their life history. They'll look at their medical history as well. And then they'll come up with some sort of diagnosis. Once that person's got a diagnosis, in many parts of the country, they will be referred to the Alzheimer's Society. Where we don't have a service, they'll be referred to another service. But in lots and lots of places in Northern Ireland, in Wales, and all over England, we have local services, like the Sahara service in Greater Manchester. So the first thing our dementia advisors will do is listen to the person and listen to what that person needs at that particular time. Some people need to talk and process the information that they've had. Some people like to understand the illness more, so they might want some information. They might want information about the diagnosis. The person might want information about planning ahead, planning, who are they going to live with in the future? Which family member might care for them in the future? Would they stay in the home that they're presently in? Do any finances need sorting out? Then they will need to carry on with their daily life, doing their routines and doing the things they like for as long as possible with support, and maybe join groups where other people with dementia can go. We tend to call those dementia cafes or well-being cafes, and they're all over the country, and it gives people a chance to be socially active, which promotes their confidence. It provides stimulation, offers routine. Because when people have got the symptoms of dementia, when the short-term memory's gone and they're finding it harder to plan things, and they've got difficulty concentrating, and they're having perception difficulties, all of those things can combine and make people lose their confidence, and people can become more anxious, and they can become withdrawn. So one of the best things to do is to keep socially involved, either with your family or with the mosque or with any other faith, or with, if you haven't got a nearby family, go to the wellbeing cafe and mix with those people and make new friends and do activities that are suitable for yourself to try and keep active. So I think that's half the answer, isn't it, Imtiaz? Did you ask me a second half of the question? Yeah. Well, how family can support people with dementia symptoms. Yeah, so how can the family support them? So again, I'll tell you a story. I once went to see a lady. She was probably in her 80s, as many people with dementia are, although not everybody, as Shugufta's already said, not everybody who gets dementia is old, and certainly not all old people do not get dementia. Dementia is not a normal part of aging. So I went to see this old lady who was 87 or something like that, and she was sat on a settee. And whilst I was there, somebody fetched her a cup of tea, somebody else fetched her something else,
somebody else drew the blinds, somebody else put the television off, somebody else stroked the dog, somebody else did everything. And Right. at the end of the conversation, I had to say to the family, you know, let the lady on the settee get up, and if she wants to shut the blinds and she's able to stand up and shut the blinds, she can get up and shut the blinds. Yeah. If she wants a Yeah. cup of tea, she could come into the kitchen and help to make the cup of tea. Because if you do everything for somebody, then they will lose the abilities that they have got. So do things together rather than doing things to them, and always involve people in decisions. Give people a choice. So, you know, what do we want for breakfast? Do we want paraffas, or do you want cereal? Do you want toast, or do you want an omelette for breakfast? Give people a choice. Do you want tea to drink, or do you want water to drink? Do you want a latte, or do you want juice to drink? So that people still feel in control of making decisions. And people who look after people, it can be really hard work as the journey goes on. And those people should make sure that they are getting support from the, say, Sahara Project or anywhere else in the Alzheimer's Society across the country. And later on, I'll give you our phone number, and I'll tell you how other ways of getting in touch. But yeah, making sure you've got enough support, taking time, allowing extra time for things, and some very simple things. Making sure that you don't have rugs all over the house that somebody might trip over, because when the brain's working slightly slower, somebody might slip more easily. Making sure that the lighting is good in the house, making sure that you've got a calendar up so the person knows what day it is. Lots of things that can make big differences to them. We have a little booklet called Making Your House Dementia Friendly, and that's a really good booklet which supports people to live well at home. If it's okay, Ben, can I just say something in our language regarding family support? Yeah. So भाई मैंने बस ये कहना आप ये जो Ben बता रही है कि जब किसी को डायग्नोसिस हो जाए कि उनको डिमेंशिया, ये नहीं मतलब हैगा कि वो एबल नहीं अपना काम करने के लिए, वो कर सकते हैं. हमारी जो कम्युनिटी है ये है कि आपका मदर इन लॉ हो या फादर इन लॉ है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी करते ऐसी कल्चरली ये करते कि जो बहू है या जो साथ रहा वो ही सब कुछ करेंगे, है ना. लेकिन हम उनकी इंडिपेंडेंस लेते हैं जब हम ये काम करते हैं उनके लिए. हमने जितनी देर तक हम उनको इंडिपेंडेंस दो, क्योंकि जैसे बेन ने किया, वो पर्सन तो इनसाइड वही पर्सन है. इफ आप उन पर्सन से सब कुछ उनका ले लेना कि ये आपने चाय नहीं बनाने, आपने किचन में नहीं जाना, आपने रोटी नहीं बनाने, आपने सालन नहीं बनाना, कि बेकार करके उसको बटाल देना ना सेट के ऊपर कि बस आप बैठ के टीवी देखना, ये भी गलत है. मेरी सास है, she's 87 years old, mashallah. I'm just talking about my mother-in-law, Ben. She's 87 years old. तो जब मैं काम पे होती हैं तो वो खुद मैनेज कर लेती कि रोटी बना लो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लेडी थी, तब वो इंडिपेंडेंस अभी चाहती है. कभी कभी होता कि मैं नहीं करने देती, लेकिन कभी होता वो मैं कह देती हूँ कि आप कर ले, जो मैस पड़ेगा कोई बात, मैं बाद में क्लियर करूंगी. लेकिन just के वो अपनी रोटी या अपनी सुबह ब्रेकफास्ट बना ले, she retains her independence, क्योंकि वो अभी तक केपेबल है. जिस वक्त नहीं केपेबल होगी तो फिर वो डिफरेंट स्टोरी होती है ना. लेकिन ऑल्सो हमारी कम्युनिटी में ये भी होना चाहिए कि जो केयर करता उस पर्सन के लिए, माँ होवे, बाप होवे, फादर इन लॉ होवे, मदर इन लॉ होवे, ये सिर्फ उनका नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. क्योंकि जब आप एक पर्सन के ऊपर बोझ लगाएंगे, उसकी मेंटल वेलबींग भी इफेक्ट होती है. मेरा भाई था ना, वो nearly enough 90% केयर मेरा भाई करता था मेरी मम्मी के साथ. लेकिन जो इम्पैक्ट मेरी मम्मी की मेंटल वेलबींग की हुई थी और मेरे भाई की मेंटल वेलबींग के हुआ था ना, हमें पता है कितनी मुश्किल टाइम वो गुजार रहे थे मेरे डैडी के साथ. इंसान भूल जाता है कि ये वो सेम पर्सन है, क्योंकि जो बिहेवियर वो शो कर रहा है वो टोटली अलग है टू व्हाट ही वाज.
सो ये होना चाहिए कि पूरी फैमिली अपनी कम्युनिटी आप ये हाइड ना करे कि ये इनके पास डिमेंशिया है, क्योंकि फिर कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। आप उसको घर में बैठा के कहना कि किसी को बताना नहीं, फैमिली को नहीं बताना, कम्युनिटी को नहीं बताना, क्योंकि वो बातें करेंगे कि हाँ है इसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। सबको अच्छा, साथ होके मिलकर ना सपोर्ट करना चाहिए। इसी से रिलेटेड, इसी से जो आपने बात की, इसी से रिलेटेड मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि अक्सर होता है कि हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जब हमारे जो लोग बड़े हो जाते हैं, एज ओवर 70-80 जब होते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि दे डोंट डू नथिंग, उनको कुछ नहीं करना है, बल्कि फैमिली ने ही उनकी करनी है। अगर कोई कोई किसी से कहे भी, मिसाल के तौर पर आपने आपकी जो मदर इन लॉ हैं या कोई कोई भी बड़ा हो, उनको कहें जी आप जाएं जी चाय बनाएं या जब पानी डाल के लाएं, या कोई वो इंसल्ट समझते हैं कि देखें जी ये छोटे हैं, हमसे काम करवाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? यही तो भाई, यही तो हमारे ये कल्चरल है ना, ये सब कल्चरल है। ये जो चीज है कि आपने आपकी सास सौरे की, हाँ जी आप उनकी मदद करें, आप उनकी लुक आफ्टर करें, भाई ये नहीं कि वो बिल्कुल डिसेबल्ड है कि वो कर नहीं सकते। मतलब जितनी देर तक उनकी इंडिपेंडेंस है उनको रखने दो, है ना। ये मैं खुद ये गिल्टी है कि मुझे लग रहा है कि मैं नहीं, कि मतलब मैं से फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने सालन नहीं बना के रखा, मैं गिल्टी फील कर रही कि नहीं है सालन बना अपनी सास के लिए, लेकिन मुझे होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी देखना, मैं सिर्फ जस्ट हाउस वर्क नहीं करती, मैं और भी काम करती हूँ, तो कभी कभी मैं लेट भी हो सकती, तो मेरी मदर इन लॉ जाके किचन में कर भी लेगी, तो इसमें क्या फर्क है। वो अकेली रहती तो नहीं, मेरे तो भी उसने करना था। साथ रहती यही नहीं कि साथ भी नहीं, तो हम सबको शेयर करना चाहिए, जितनी देर तक आप कर सकते तो शेयर करें। मुझे पता मेरी सास 42 या 44 की थी जब उसकी फर्स्ट डॉटर इन लॉ आ गई थी, लेकिन उसने ये तो नहीं किया कि बस वो ही काम करी, वो साथ खुद हेल्प कर रही थी। तो आजकल जो हो रहा है, आजकल तो बच्चे साथ भी नहीं रहे, तो हमारे जैसे मदर इन लॉज को खुद ही इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। We have to make sure we keep independent, we look after our health, because we are going to be on that stage when we're 70-80, we are going to be looking after ourselves. At the moment जो trend है, because जब हम ग्रो अप कर रहे थे हमारे माँ बाप ने हमें समझाया था कि आपने अपनी इन लॉज की जाके खिदमत करनी है, आपने उनके लिए सब कुछ करना है, लेकिन ये कल्चर अभी चेंज हो रहा वा। ये 20-30 years जब हम 80 years के होंगे, ये ऐसा नहीं होगा, कल्चर ये चेंज होया होगा। So we have to make ourselves independent. We have to understand that we should not be relying on anybody but ourselves, है ना। तो जो हमारी ब्रिटिश वाइट कम्युनिटी है, वो already used to है कि उन्होंने अकेले होना, so that's why they are very independent in how they live. They don't rely on family. but जो हमारे कल्चर में है, हम बहुत रिलाई ऑन कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर, हमारे डॉटर इन लॉज के ऊपर, सन इन लॉज के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं। तो ये दिस इज मोर बिकॉज ऑफ कल्चर मोर देन एनीथिंग एल्स। अच्छा, इससे ये भी होता है ना कि अगर एक किसी को अगर कुछ काम करना भी पड़े, तो उसकी थोड़ी सी हरकत भी हो जाती है, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। अगर हम बैठे बैठे ऑर्डर ही करते रहें जी चाय चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए, जी ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर हमारी जो बॉडी है जो वो भी स्टिफ हो जाती है, फिर वो नाकारा हो जाती है। ये भी एक इश्यू हो जाता है। नहीं सही, आप सही बता रहे हैं। इफ इवन गोइंग इनटू द किचन टू मेक अ कप ऑफ टी, ये एक्सरसाइज एक किस्म का हो गया। आपने नमाज पढ़नी, ये भी एक्सरसाइज हो गया। ये गार्डन में जाए, थोड़ी सी गार्डनिंग कर ले, ये भी एक्सरसाइज हो जाए। आपकी सेहत के लिए, आपके लिए फायदा होगा। आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप एक किस्म का बोझ नहीं पड़ेंगे फैमिली के ऊपर। जितनी देर तक आप कर सकते, आप जितनी भी इंडिपेंडेंस ले सकते, तो आप करें, जरूर कोशिश करें। अच्छा, ये जो सवाल था ये तो आ गया था दरमियान में। जो अगला सवाल आपके लिए, फिर बिन के पास आएंगे। जो आपके लिए मैंने सवाल जो आगे जो लिखा हुआ है वो ये कि कौन से ऐसे मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे हम डिमेंशिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। So इसको there's तफसील lots of के साथ measures. Yeah. So there's lots and lots of measures जो हम कर सकते। First of all, मैंने जो कितनी दफा बोल रही है, आपने एक्सरसाइज करना, आप अपने हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना,
तो ये आप चीजें अडॉप्ट कर लेंगे तो आप अपना रिस्क लो कर सकते डिमेंशिया के लिए, है ना। सो सब तो इम्पोर्टेंट हेल्थी डाइट, हमारा जो खाना है, ठीक है हम सालन बना रहे तो हम कम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कम घी इस्तेमाल कर सकते। कई तो बिल्कुल घी ऑयल यूज नहीं करते, पानी के साथ जो अनियंस है उसको गाल लेते हैं पानी के साथ, जस्ट ईट लॉट्स लीन मीट, ज्यादा गोश्त वगैरह कम करे, स्पेशली फैटी मीट्स, लीन मीट, चिकन वगैरह खा ले। जो शुगर वाली चीजें हैं, मतलब जो हाई इन शुगर है, इसको कम कर ले, because all these things lead to diabetes, obesity, and heart disease. So change your diet if you can. Physical activity, engage in regular physical activity. आप जिस तरह मैं बता रही, आप बाहर नहीं जा सकते, घर में कर ले जो कुछ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह मैं फजर की नमाज पढ़ के आई गो आउट 7:30, मैं 1 hour वॉक करके तो फिर मैं घर आती तो मैं अपना 8:30 अपना काम शुरू कर लेती हूँ। ये इंसेंटिव्स आपने खुद करने हैं, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ये कोई आपको पुश करके नहीं करवा सकता, आप खुद करेंगे तो ये हो सकता है ना। तो ये सब आपकी सेहत के लिए है, आप ठीक रहेंगे तो आप अपनी फैमिली की भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, तो आप अपनी भी लुक आफ्टर कर सकते हैं। ये जो इंसेंटिव्स है जो मैं आपको प्रिवेंशन बता रही, मैं बता रही कि आप अभी इस्तेमाल करें इन योर 40s 50s। मैं ये प्रिवेंशन अभी, जब आप 80s हो जाएंगे तो इस बिट मुश्किल, 40s 50s में आप ये इम्प्लीमेंट कर ले कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने अपना डाइट चेंज करना वा। बहुत इंपॉर्टेंट, आप रेगुलर अपनी हेल्थ चेक्स भी कराना, डॉक्टर्स के पास जाना, तो क्या लाइक वंस अ ईयर, मैं वैसे तो जाती नहीं लेकिन वंस अ ईयर मैं जरूर जाके अपनी कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जो जरूर चेक करवाती हूँ। दिस मस्ट बी समथिंग वी शुड इम्प्लीमेंट, दैट वी डू इट एवरी ईयर, एट लीस्ट वंस अ ईयर, चेक इट। टाइम निकालना पड़ता है, सबकी लाइफ बिजी है लेकिन आपकी सेहत के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। स्टे मेंटली एक्टिव, engage in activities। से आप रिटायर हो गए 65 से ये नहीं कि आप रिटायर होगी तो आप विले बैठ जाएं घर, आप कोई वॉलंटरी वर्क कर ले, बाहर जाके कोई मस्जिद में जाके कोई मदद कर ले, कोई वॉलंटरी ग्रुप पे जाके हेल्प कर ले, मतलब अपने आप को एक्टिव रखें, डोंट जस्ट सिट एट होम। तो स्पेशली मैं अपनी लेडीज को कह रही हूँ, क्योंकि ये जो डिमेंशिया है हमारी जो ज्यादा लोग को होती है ना, वो औरतें हैं, तो औरता को ज्यादा होती। सो इफ यू आर अ मर्द, you have to look after your loved one, your wife. If she gets dementia, then you are the one that has to look after her. So it's very important that men are aware of what dementia is. आप अपना सोशल इंटरेक्शंस रखें, वही मैं बता रही, अपने आप को सोशल रखें, एक्टिव रखें, especially if you have elderly people in your family and आपके पास छोटे बच्चे हैं, आप अपने छोटे बच्चे को अपने दादी दादा नानी नानी के साथ बिठा के उनके साथ puzzles, games, jigsaws, word search, ये जो electronic games जो बच्चे खेल रहे, this is a very good brain stimulating game for the elderly as well. So something like that, incorporate that within your home life as well. स्ट्रेस आजकल बहुत है, मेंटल हेल्थ इलनेसेस काफी है, डिप्रेशन, ये सब चीजें है ना, put you in the high risk of getting dementia. So आप अपने आप को एक्टिव रखें, बिजी रखें, तो inshallah you can reduce the risk of getting dementia. Okay, So these thank are you. some of the And I think, preventative methods. yeah, okay. Shall I ask question to Ben now? Ben, we have only 20 minutes remaining, and I know you have enlightened on the difference between Alzheimer and dementia. Can you explain further on dementia? What is dementia? So, as I said, it's a set of symptoms, really, which are affect people's brain. I can give you a little bit more detail about what Alzheimer's disease is caused by, and a little bit more detail about what vascular disease is caused by, and that will give you sort of a bit more scientific understanding. So the causes of Alzheimer's disease are really complex, but one key part of understanding Alzheimer's disease is understanding that inside the brain we have lots of substances, and we have two substances in the brain, one called amyloid and one called tau, T-A-U. And when conditions in the brain aren't right, these clump up
and they make tiny little structures, which we call plaques and tangles. And these make it harder for the brain to work. And over time, the disease causes certain parts to become smaller. So the brain begins to shrink. And as the brain begins to shrink, then it also reduces the amount of important chemicals needed to send messages around the brain. So the brain actually physically shrinks, and there's less of these chemicals made, and the messages can't get from one part of the brain to the other. So I sometimes think about it like the London Underground map. So if you've ever seen the London Underground map, then it's a real tangle of lines, and you want to get from one station to another station. And there is a most direct route to go, but you can also go an indirect route. And what happens when somebody gets Alzheimer's disease and somebody's asking them a question is the person doesn't give them enough time to answer, and the person's brain doesn't have enough time to go from here to the most direct route. It might go round and round on an indirect route, but it will get to the answer after a bit of extra time because the brain's in a tangle. Eventually, as the brain shrinks, the brain struggles to cope with the damage, and the person begins to have problems with the memory and the thinking. And when it gets to the stage where these problems are making it difficult for doing everyday tasks that they used to do easily, that's the point when we sort of tend to call it more dementia. So this is Alzheimer's disease, which is a dementia. But to start with, they're so subtle are these changes most often that people don't always recognise them. I think Shagufta might have already said that it's often family members that notice the difference in a person rather than the person themselves notices. So that's a little bit about Alzheimer's disease. Do you want a little bit of scientific about the vascular one as well, Yes, Imtiaz? please. Yes, please. Definitely. Yes, please. Yeah. So again, I think Shagufta's done some of this, but I'll just explain it perhaps a bit more scientifically. In vascular dementia, the symptoms occur when the blood supply to parts of the brain becomes damaged. And for brain cells to remain healthy and to function properly, they need a constant supply of blood in order to get the oxygen and the nutrients. And blood's obviously pumped through the brain through a network of vessels called the vascular system, which includes the arteries, the veins, and the smaller vessels. But when the blood vessels in the brain are damaged by the disease, they leak or they become blocked, and blood can't then get to the brain cells. And so these brain cells eventually die. And vascular dementia develops over time as more brain cells die and are not replaced. Problems start to occur with memory, thinking, and reasoning and begin to affect everyday life. So it just explains, doesn't it, that there's two completely different physical systems there, but they both end up with dementia. One's called Alzheimer's disease, one's called vascular dementia. Did that help you, Imtiaz, to understand that a bit more? Can you, when people are diagnosed and when they go to, if they have symptoms and they go to their GPs, sometimes what happens, the GPs says there's nothing wrong. What do they do if they have symptoms, but the GP says nothing wrong with you? What do they do? Because it happens Give to me 1 second. myself. It I'm happens. going somewhere. I'll be back in 1 second. So one of the things I that the just like to give Alzheimer's you. Society, If I just give you one example, yeah, I know other people as well, but when I was examined for my eyesight in 1976, I was told wow, by the senior consultant ophthalmologist, after 1 year examinations, he told me there's nothing wrong with you. You are wasting my time. oh Those dear, words I still remember after nearly 50 years. Now I know very recently, about
4 weeks ago, one of my friend, he had a health condition. He went to a GP and then went to a hospital. They told him there's nothing wrong with you. And then at the end, when it became very, his condition became very severe, then they had his scanned and they diagnosed the condition. So what do the people do when one of your GP, you trust your GPs, they say there's nothing wrong with you? What do you do? Okay, so we hope that you get a good GP. One of the things you can do, and these are on our website, just trying to get it the right way around for you. This is called My Checklist for Possible Dementia Symptoms. And you can print this off our website and take it to your GP. And it asks a lot of questions. Are you struggling to find the right words? Are you struggling to make decisions? Are you losing track of time and dates? Are you asking the same question again and again? And you tick, yes, I am, yes, I am, yes, I am. And then you would take this piece of paper from the Alzheimer's Society to your GP. And the GP will look at it and think, there is something going on here. The GP normally does a mini mental test, which just involves 5 questions. And if people are very intelligent and watch the news regularly and are quite up to date with things, they often get all 5 questions correct. So they sometimes do blood tests as well. And people can get to the memory clinic and can still do very well in the tests. And they might be told that they've got something called mild cognitive impairment. A mild cognitive impairment is it's a separate disease to dementia. Not everybody who gets mild cognitive impairment will go on to get dementia. I think about 20% of people per year go on to get dementia, but I perhaps shouldn't quote that number. And so somebody with mild cognitive impairment might not get passed on to the Alzheimer's Society. But if you are worried about your memory, you can come to us and we will try and support you to find the right medical route to getting a diagnosis. There will be some people which we can sometimes call the worried well people. The worried well are people who worry about the memory because they've forgotten where the car keys are, or they've forgotten somebody's birthday that's really important to them. But we all make mistakes like that. I lost my car keys yesterday. I couldn't find them and I was running late for an appointment nearly, but then I found them where I'd left them. So, but I don't worry about having dementia because I know losing my car keys now and again is just a normal part of getting older. It isn't a part of dementia. So if you haven't managed to get a diagnosis, talk to your family, talk to your friends, see what they think. Go back and get a second opinion. Because like with you, Imtiaz, you were right about your eyesight, and a person knows themselves well. So if they really are struggling and they can take some examples to the GP, that might help them as well. But come to the Alzheimer's Society because we can support you through that process. We can guide you and tell you things to help you through that process, hopefully. If someone comes to Alzheimer's Society, if they have symptoms and they just think that they need advice, would you do the referral as well? We don't do the referrals. Well, I suppose we just suggest somebody goes back to the GP. We would still give them support about if somebody's got memory problems, we can give them advice about how to cope with those memory problems. We have a booklet called the Memory Handbook, and lots of people would find things in the Memory Handbook very useful for strategies for dealing with memory loss. Okay, and we also provide literature as well by Imtiaz. So some of the literature that we provide is in Urdu, Gujarati and Hindi as well. So जो हमारी South Asian community है वो भी access कर सकते हैं. आप हमारी website पे जाएं ना तो वहाँ आप resources जो है free download कर सकते हैं या आप उसमें मंगवा सकते हैं as well. So South Asian community के लिए भी मिलती हैं हर चीजें. So it's like we cater for everybody, inshallah. अच्छा,
ابھی جو آپ کے لیے کوشچن ہے کہ اگر ہماری کمیونٹی میں کسی کو کوئی ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس کے لیے کون سی سروسز ان کے لیے اویلیبل ہیں اور سروسز یا سپورٹ اویلیبل ہے؟ تو ظاہر ہے ان کو ڈائگنوسس ملے تو وہ گریٹر مانچسٹر میں ہے کیونکہ ہماری جو ٹیم سہارا ہے نا وی کور آل 10 boroughs of greater Manchester, so Rochdale, Manchester, Wigan, Bury Oldham ہے نا. لیکن جنرلی اوور آل ان دی UK کسی کو ڈائگنوسس جی ان جنرل جیسے آپ مانچسٹر میں نہیں ہیں اگر کہیں اور بھی ہیں تو سب کے وہی لیے میں بتا رہی ہوں ہاں وہی میں بتا رہی ہوں کہ if they're not in Greater Manchester but generally all over UK جس طرح بین نے بھی پہلے بتایا تھا ہمارے dementia advisors are all over UK, England, Northern Ireland, Wales ہمارے ہر جگہ پہ ہے. نہیں ہوگے تو اس جگہ پہ الزائمر سوسائٹی ہم لوگ آپ کو کسی اور کی مدد کے لیے ریفر کر دیں گے. there's other groups out there that can support with dementia as well apart from Alzheimer's تو پھر ہم ان کو سائن پوسٹ کریں گے. لیکن آپ ہمارے ادھر گریٹر مانچسٹر میں ہوئے تو ہم لوگ ہیں سہارا ہم پورا گریٹر مانچسٹر کو کور کریں گے. تو سو ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں سم آف اس کو لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے جس طرح میرے پاس ہے میرے 2 اور ایڈوائزرز کے پاس بھی ہے لیوڈ ان ایکسپیرینس کو یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں جب ہم لوگ ہوم وزٹ پہ جاتے ہیں نا جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایک لوڈ ممبر آف فیملی تھا جن کے ساتھ اب ڈیمینشیا تھا تو وہ جلدی انگیج ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. They're more open to conversation about dementia. جو مطلب جو جن کو ڈیمینشیا یہ نہیں کہ وہ سمجھ نہیں رہا کہ کیا آپ کر رہے ہیں بات so we include them in the conversation. So for example say میں ہوم وزٹ پہ جائیں تھا اس کی مدر ان لا کو ڈیمینشیا ہے میں آنٹی کے ساتھ بھی بات کروں گی میں اس سے تمیز سے عزت کر کے جس طرح میں اپنے کسی فیملی ممبر کے گھر پہ جاتی ہوں میں ایسی ان کو پکارتی ہوں کہ آنٹی جی کیسے ہیں آپ تو میں ان کو بھی انوالو کرتی ہوں. میں اس کو ڈپینڈنگ فیملی چاہتے ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ اس کے ان کو ڈیمینشیا کا کئی فیملی اسٹل reluctant to say and tell their loved ones that they've got dementia. But we will not use the word dementia then we'll just alternate by just saying کہ آپ کی کوئی میموری کا کوئی ایشو ہو رہا ہوا یا کس طرح لیکن we involve them in the conversation. ہم اس کو ایک سائڈ پہ نہیں رکھتے کیونکہ ہم ان کی زبان جو بولتے ہیں so we can converse with them in our language explain کر سکتے ہیں and then you know in our communities a lot of people don't know that if you've got somebody with dementia there's benefits they can claim like carers allowance, attendance allowance. یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو لاسٹنگ پاور اٹرنی ہے کہ یہ بھی بہت ضروری کہ آپ اس کو have it in place because جب ان پرسن کی کیپیسٹی مطلب اس کی یادداشت کم ہو جائے گی health decisions, legal decisions کوئی لاسٹنگ پاور اٹرنی ہو تو وہ انسان بنا سکتا ہے نا ان کے لیے. And also we signpost them to groups that they can attend for their mental well-being جس طرح ہم لوگ سہارا نے ماشاءاللہ within like 2 years ہم نے 2 میموری کافی کھولی ایک روچڈیل میں تو ایک چیڈل میں اسٹاک پورٹ میں وہاں ہمارے جو جنہوں نے ہماری سروس یوز کی ہے وہ آ سکتے ہیں لیکن کمیونٹی جن کو میموری ایشوز ہے یا ڈائگنوسس ہے لیکن انہوں نے ہماری سروس نہیں استعمال کر لیکن they're more than welcome to come. تو ہم ادھر ان کے ساتھ مطلب ایکسرسائز کرتے ہیں کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو ان کے برین کے لیے ہے اسٹیمولیٹنگ وہ کرتے ہیں. So as dementia advisors we advise and signpost you to the services and support that's out there for our communities کیونکہ ہماری communities access نہیں کرتے وہ پوچھتے نہیں کہ sometimes ہے نا تو so when there is a service now specially designed for them تو ہم یہی چاہتے کہ آپ ask کریں we don't mind آپ نے فون کر کے جس کوئی بات کرنی کوئی انکوائری کرنی we're happy to even just talk to you over the phone. It's a free service, it's confidential. آخر میں کوئی ایسی بات جو میں نہیں پوچھ سکا ہوں آپ کے ذہن میں ہے جو ہماری کمیونٹی کے لیے امپورٹنٹ میسج آپ یا آپ کی جو سروسز کو ایکسیس کرنے کے علاوہ دوبارہ سے آپ وہ ویب سائٹ وہ بتا دیں اگر تو وہ بین آپ کو بتائے گی ہاں جی وہ بین بتائے گا آپ کو نا کہ سروسز کیا ہے لیکن میں بس یہی کہوں گی کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہی جو میں نے پہلے کیا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو ڈیمینشیا کے بارے اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرے. ہم ٹیم سہارا لوگ ہمارے جو کمیونٹی میں ہے ڈیمینشیا کا کوئی الفاظ ہی نہیں ہے گا
That's why हम Okay, लोगों ने अपने okay. आप को सहारा रखा, क्योंकि सहारा का मतलब मदद, सपोर्ट। हम आपकी जी सपोर्ट जी कर सकते हैं कि इतना है कि हमारी जुबान में कोई अल्फाज ही नहीं हैगा डिमेंशिया वास्ते, मतलब that just shows you कि हम लोग बात नहीं करते, कोई भी मेंटल हेल्थ इलनेस हम बात नहीं करते। मैं बस ये कहूंगी कि आप बात करें, अपनी फैमिली के साथ बात करें, अपने बच्चा को समझाएं कि ये डिमेंशिया क्या होता है। ये एज रिलेटेड नहीं, ये अभी अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया भी है कि जो लोगों को लेट 40s अर्ली 50s में हो रहा है ड्यू टू ठीक स्ट्रेस, ठीक है, द वे लाइफ इज खत्म हो एट द रहा है मोमेंट, है ना जी, जी। वक्त खत्म हो रहा है। I have to go to Ben for I've All got right, only 2 minutes. Ben को पूछ ले, they'll Yeah. tell you about the So service. Yeah. so I've got only 2 minutes. Ben, anything that you think that I should have asked you, I didn't ask. I've Yeah. got 2 minutes, and then you give your some website and some others about the services. Okay, so I just trying to show the dementia support opening line times. So I'll read them to you. So our dementia support line is a free number. Well, you pay your phone calls, but free service. It's open Monday to Wednesday, 9 o'clock in the morning, right through to 8 o'clock at night. Thursday and Friday, it's open 9 o'clock in the morning till 5 o'clock in the evening. And Saturday and Sunday, when lots of other services are closed, it's open from 10 o'clock till 4 o'clock. And the number, if anybody wants to write it down, is 0333 150 3456. And as I said, that number there is our dementia support line, and it works for anybody from Northern Ireland, anywhere in England, and anywhere in Wales. But we also have a website, which is www.alzheimers.org.uk. I'll try and show it to you on the screen. Yeah, thank Quite you very difficult much to do this, isn't it? for. Right, so Thank we you have very much for. alzheimers.org.uk. Yeah, and there's Yeah, an thank you online forum on there as well. Yeah, we have to wind up. Our time is over. Thank you very much for both of you for joining me, and we had a very good, very important, informative discussions, and I hope that people will benefit from today's discussion. Thank you very much for both of you, and hopefully we Thank you. may rearrange another program later in the year. So maybe, because it is very important to highlight about these issues, because it will definitely benefit our viewers. Yeah, thank you very much for having me, Imtiaz. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you both. Okay, Bye. thank you. Allah Hafiz. Allah Bye. Hafiz. जी नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम का बात खत्म हुआ जाता है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले हफ्ते नए